data set. So up to this, what we learn? We learn actually integration function. We learn actually features. We learn activation function. We learn actually integration function. And the third thing is nothing but a neuron. How the neuron algorithm or perceptron algorithm actually works. Now the next thing is like layers are transformation into a new space. So what's the meaning of that and what we will learn in this session? So guys, just recall that SVM. In that SVM, we have a Rangoli type of design. Like here we have a first layer, and here we have a green signal, otherwise green point layers. Consider this is nothing but red points, and here we have some green points. And we want to just classify it because this is binary classification problem. We have two color dots or we have two color cross signs, and हम लोग को इसको classify करना, then what to do? So normal linear, otherwise a single line is not enough to classify this data set. So what we have to do? हम लोग को यहाँ पे actually इनको like SVM in the sense like support vector machine in the sense single line से classify करना था. So what we did, we just transfer our data set from actually like into 3D data set. So we tried to like transfer our 2D data set to the 3D data set. Okay, and 2D to 3D in the sense this is our red circle, this is the like green circle points, and after all finally हम लोगों ने इनके बीच में से एक SVM पास किया था. So we just learn a model to classify this data set. But before that हमने इसको transform किया था, और वो visualization वाला एक हम लोगों ने कुछ वीडियो भी देखा था YouTube का. Just recall that thing. तो यहाँ भी मुझे ऐसा ही करना है कि सर actually हम लोग को करना नहीं है, we want to just discuss कि सर हम ANN यूज कर रहे तो ऐसा कुछ internally हो रहा है कि नहीं. So but of this guys, internally ANN also transfer the actually space, in short transfer the data, otherwise transfer the actually feature into the new feature space. तो जितने लेयर्स से आप पास ऑन होंगे, जितने लेयर्स से आप पास ऑन होंगे, लेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, न्यूरॉन की बात नहीं कर रहा. मान लीजिए मैंने एक हिडन लेयर इंट्रोड्यूस किया, मैंने सेकंड हिडन लेयर इंट्रोड्यूस किया, मैंने थर्ड हिडन लेयर इंट्रोड्यूस किया. जितने हिडन लेयर्स आप इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, जितने हिडन लेयर्स आप इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, व्हाट विल हैपन उसमें एक हिडन लेयर से सेकंड हिडन लेयर पे जाने का मतलब आपका डेटा सेट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सेकंड लेवल पे, न्यू स्पेस पे ट्रांसफर हो जाएगा. सो लेट मी चेक. So now just like go with this one. So this is a first hidden layer, this is the second hidden layer. You cannot say this is the hidden layer, this is not the hidden layer, sorry, that's my mistake. Just a moment. Fine. So this is not the hidden layer. These are actually actually ellipse is used to like introduce the connection, or you can say that edges. So this is my first hidden layer. Okay, this is my first hidden layer. So now consider in this example I have 4 inputs and 5 neurons in that hidden layer. 4 inputs and 5 neurons. So now the thing is like हर एक न्यूरॉन में हर एक फीचर से डेटा पास होने वाला है. So in short ये जो मेरा फर्स्ट न्यूरॉन है will have actually 4 edges because 4 inputs are there. जो मेरा सेकंड न्यूरॉन है having actually 4 edges because I have 4 actually inputs, otherwise 4 features. इसके पास भी 4 inputs होंगे, इसके पास भी 4 inputs होंगे, इसके पास भी 4 inputs होंगे. So guys, हम लोग के पास कितने न्यूरॉन्स हैं? सर, we have 5 neurons. How many edges I will have? I will have 20 edges. I will have 20 edges. तो मुझे पहले वो बताए, अगर मैं वेट वेक्टर की बात करूं तो मेरे वेट कितने वेट मुझे यहाँ पे एज्यूम करने पड़ेंगे? So जितने edges उतने वेट, जितने edges उतने वेट. So how many edges we have? We have 20 edges. Then guys, हम लोग को 20 वेट निकालने पड़ेंगे. First of all हम लोग को 20 वेट्स एक बार एज्यूम करने पड़ेंगे. Now let me consider कि हमारे पास बायस वैल्यू भी थी. हमारे पास बायस वैल्यू भी है कि हर एक इनपुट के अंदर एक बायस है. जैसे यहाँ पे एक बायस वैल्यू है, here we have one bias value, here we have one bias value. So how many bias value we require? We require actually 5 bias value because we have 5 neurons. Okay, so we require 5 bias values because we have 5 neurons. So what we required 5 bias values. So finally 25 weight vectors, otherwise 25, not the weight vectors, 25 weights we have to consider for a layer. So it depends how many neurons we have. How many neurons we have? If you have 5 neurons, so 5 into 4 plus 5. Why 5 into 4? 4 in the sense that's nothing but a weighted value. Sorry, that's nothing but an actual features plus values. So that's that. So now after that मेरे पास 5 न्यूरॉन थे, and इस hidden layer के बाद जब मेरे पास finally एक output आ रहा है उसमें एक न्यूरॉन है. So only single neuron I have. Okay, so how many actually weight we require? So guys, it depends how many features you have. So I have 5 features because in से पांचों का एक output आएगा. So I have 5 features. So you will have actually, you require 5 weight and 1 bias.
But here there is no requirement of the bias because right now feature नहीं आ रहा, मेरे पास जो data आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? The data comes from the actually hidden layer. जब आप फर्स्ट लेयर पे डेटा ट्रांसफर करोगे तब आपको एक्चुअली यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है. बट दैट्स लाइक जस्ट इग्नोर द थिंग. मैं यहाँ पे सिंपल इतना बोल रहा था कि यहाँ मेरे पास 4 इनपुट थे. ओके, या राइट नाउ आई हैव 5 इनपुट्स. एंड यहाँ जब मैंने इनपुट दिया तब मेरे पास वेट कितने वेट्स थे? मेरे पास टोटल 25 वेट्स थे. सो इट जस्ट रियलाइज कि यहाँ कुछ तो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन सिस्टम अगर हम कंसीडर करें तो मेरे पास पहले 3 कोऑर्डिनेट्स, मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स पे वर्क कर रहा था, अभी 5 कोऑर्डिनेट्स हो रहे हैं, 5 कोऑर्डिनेट्स बाद 2 कोऑर्डिनेट्स हो रहे हैं, देन आफ्टर 7 कोऑर्डिनेट्स हो रहे हैं. दैट मींस मेरा पूरा डेटा सेट ट्रांसफर हो रहा है. ओके, मतलब जो लेयर्ड है वो लेयर 1 लेयर से सेकंड लेयर से थर्ड लेयर पे जाएंगे. तो एक्चुअली मेरा जो डेटा था वो एक्चुअली मेरा जो स्पेस था वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है. लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल सो इट विल बी मोर क्लियर. सो एक बार रिकॉल करते हैं हमारे पुराने एग्जांपल को. सो लाइक कंसीडर दिस वन गाइस. वंस अगेन मैं एकदम सिंपलीफाई यूज कर रहा हूं. मेरे पास 3 चीजें ऑलवेज होती है. एक तो पहला इंटीग्रेशन फंक्शन. सो हियर माय इंटीग्रेशन फंक्शन इज एक्चुअली wixi. Okay, integration function is actually wixi, sigma of wixi. Okay, and here we will not discuss actually activation function because I do not want to actually focus on the actually like dry run of this program. I do not want to actually solve this program. मैं कुछ value predict करके रखने वाला हूँ, otherwise assume करके रखने वाला हूँ. So activation function I do not want to use. The second thing is how many neurons you have, otherwise how many hidden layers you have. So like जहाँ circles किए हुए, these circles are nothing but neurons for me. Okay, so now consider this example. X1 and X2 are nothing but in feature value. Okay, these are nothing but in input. And here I have one hidden layer. This is my hidden layer. Here I have one hidden layer. Okay, I want to just know कि अगर मैंने कोई hidden layer introduce किया तो मेरा जो data set था वो transform हो रहा है कि नहीं. So this is the hidden layer and this is the final neuron. Okay, so this is the hidden layer. Fine. Okay, so now ये पहला जो hidden layer है उसके लिए input क्या होगा? So how many feature values we have? I have 2 feature value X1, X2. So we require actually weight vector that is W1, W2. So the outcome is actually of this one, the outcome is actually H1. The outcome of this one is actually H2. And here the weight vector is actually K1, K2. What is the value of H1? What is the value of H2? That is actually H1 like W1 X1 plus W2 X2 plus theta. Okay, plus some actually like bias value. Because हमने bias यहाँ पे introduce नहीं किया, but you can consider that also. Here the outcome is actually K1 X1 plus K2 X2 plus theta 2. Now ये दोनों इनपुट होंगे मेरे पास फाइनल न्यूरॉन के लिए. एंड कंसीडर द वेट वेक्टर इज एक्चुअली m1 m2. द फाइनल आंसर इज एक्चुअली h1 m1 plus h2 m2 फॉर एक्चुअली फाइनल प्रेडिक्टेड वैल्यू. दैट्स दैट. सो नाउ अप टू दिस आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं. सो नाउ लेट मी कंसीडर आवर एक्चुअली लाइक XOR टेबल. सो दिस इज द इनपुट x1 x2 0 0 0 1 1 0 1 1. This is the truth table, binary truth table, that is nothing but it. And this is my actual outcome. This is my actual outcome. That is actually 0 1 1 0. That is actually XOR truth table actually. So now let me just consider the first hidden layer, guys. Let me just consider first hidden layer. So after the first hidden layer, I will have H1 and H2 models. I will have H1 and H2 models. I will have. So this is my input space with actually H1 H2. So let me just consider this is my H1. H1 just predict this line and H2 will predict this line. Okay, H2 ने ये line predict किया था. This is a straight line. Please consider this one is a straight line. Okay, this is the H2. So this is H1. So this is H1 and this one is H2. So मेरा input space था. Then actually मैंने H1 and H2 मतलब जो hidden layer था. Hidden layer के बाद मुझे 2 मॉडल मिले थे H1 and H2. Why 2 models? Because I have two neurons. अगर मेरे पास 5 न्यूरॉन होते then it will just predict 5 different models actually. So that's that. So now let me just check. So guys मेरे पास 4 input focus करिएगा guys. मेरे पास 4 points थे. Let me just give them a label. That is actually P1, P2, P3 and P4. मेरे पास 4 पॉइंट थे. Let me just consider the first point, that is 0 0. But before that, what this H1 and H2 says? H1 and H2 क्या बोल रहे हैं मुझे? So H1 and H2 just says like whatever the value above the H1, it's 1. Whatever the value above the H1, that's 1. Whatever the value below the H1, it's 0. In a similar way, like H2 says whatever the value in the right hand side of the H2, it's 1. It just say it's 1. And this and on the left hand side of H2 it is actually 0. Okay, it just say this is 1, this is 1, and here whatever the value is there, that it will predict actually 0. Okay, so now let me just input our data.
So my first data is actually 0 0. That's my first point. 0 0 0 0. So 0 0 is here. 0 0 here. So अपना H1 और H2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में. So अपने मॉडल क्या बोलेंगे? Oh sir, that's nothing but a zero. That's nothing but a zero. Now let me just check the actual output of that, like 0 0. The actual output is also 0. So that's actually a gray point. Now let me just introduce the next point, that is actually 0 1. So this is my 0 1. This is my 0 1. So what 0 1 says, it is in right hand side or the above side of this actually H2, and also it's an above, like it's actually below side of the H1. H1 के left hand side पे है, H2 के above side में. Then it just say okay, then finally that is 0. That is 0, but actual output is actually 1. So that's wrongly classified. As we know, वो wrongly classified हुआ था. Okay, in a similar way, let me just introduce the third point, that is actually 1 0. 1 0 is also in a gray point. It's in a gray region. That's actually wrongly classified. यहाँ पे 1 है, but हम लोगों ने इसको 0 predict किया था because of this H1. H1 just say, oh, that's 0. Okay, H1 के left hand side पे था, H1 के below part में था. Now what about this P4? The P4 is actually 1 1. It's an above side of H1 and H2 both. Just say, oh, 1. That's output is 1. So is this clear? तो ये hidden layer का कुछ मेरे पास output था. ये मेरे पास hidden layer का कुछ output था. Now let me just do one thing. ये दोनों hidden layer का data हम finally किनको pass कर रहे हैं? We are just we just pass this data to the final neuron, and that's actually transformation matrix. That's actually transformation matrix. But guys, before the transformation matrix, let me just add 2 columns, that is H1 and H2. That is H1 and H2. Now let me just consider. First point is 0 0. First point is 0 0. What H1 and H2 just say? So H1 says that is 0. H1 ने उसके लिए क्या बोला था? That is 0. H1 के left hand side पे देखो ना, H1 के कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. So it just says that is 0. According to H1, P1 के लिए prediction क्या मिला था guys? P1 के लिए prediction मिला था 0. So here I just note down 0. H2 ने P1 के लिए क्या predict किया था? It just says 0. So हमने यहाँ 0 लिखा. Now let me just go to the P2. P2 के लिए H1 ने क्या बोला है? H1 just say, oh sir, that is 0. H1 के left hand side पे it just says 0. But H2 just say, oh sir, that is 1. That is 1. ओके तो यहाँ हमने 0 लिखा, यहाँ 1 लिखा. ये पॉइंट समझ में आया गाइस? ये पॉइंट समझ में आया? 0 और 1 क्यों आया? बिकॉज लेट आई जस्ट रिमूव ऑल दिस थिंग. ओके सो दिस इज माय H2, दिस इज माय H1. H1 के ऊपर के डायरेक्शन में आया, देन द प्रेडिक्शन इज 1. H1 के बिलो डायरेक्शन में कुछ भी मिला, इट जस्ट से 0. ओके सो सिमिलर वे H2 के ऊपर कुछ आया, इट जस्ट से 1. H2 के नीचे कुछ भी हमारा इस एरिया में कुछ भी आया, इट जस्ट से 0. ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये 0 बोल रहा है, ये 1 बोल रहा है, ये 0 बोल रहा है, ये 1 बोल रहा है. एंड ये डेटा मुझे कैसे मिलेगा? 0 and 1 मतलब ऊपर की डायरेक्शन और नीचे की डायरेक्शन कैसे मिलेगा? सर इंटीग्रेशन फंक्शन को कॉल करें, WIXI. एंड व्हाट अबाउट द एक्टिवेशन फंक्शन? तो इंटीग्रेशन फंक्शन का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया. our step function, our activation function will say sir output is 1. Our step function, अगर इंटीग्रेशन फंक्शन का आंसर लेस देन 0 आया, our step function will say oh sir output is 0. Okay, according to that हमने H1 और H2 को predict किया, sorry train किया था, H1 and H2 को like develop किया था. So that's that. Now let me once again start with the P1, P2, P3, P4 points. So this is P1, this is P2, मैंने कुछ labels दे दिए थे, this is P3 and this is P4. तो पहला point लेते हैं 0 0. So as per this diagram, it just say 0 0 means something over here. So H2 के left hand side में है, H1 के भी left hand side में है, तो इसके लिए H1 और H2 क्या predict करने वाले हैं? It just say 0 0. So here we have 0 0. Let me consider P2. So P2, H1 के below direction में, it just say oh sir it is 0. But H2 insert this point, this line. तो ये line के ऊपर है, that means it just say 1. So यहाँ पे मुझे output मिला था 0 and 1. It just says 0 and 1. Now what about H3? Sorry, what about P3? So for P3, like actually H1 says 0, H2 says 1. So for that actually 0 1. What about P4? Both just say 1. Both of them just say 1. Is it clear guys? ये table यहाँ तक सबको clear है? Yes sir. Finally guys, जो lastly मेरे पास ये जो third neuron develop हो रहा है, इस third neuron के लिए input क्या है? For this third neuron, input is actually H1 and H2. This is my feature value. H1 and H2 is my feature value. What about this M1 and M2? That is actually weight vector. Just ignore. Okay, weight vector we can compute. Weight vector हम लोग को मिल जाएगा. But what about this H1 and H2? That is actually my feature space. That is my value. That is my input value. So now let me consider. जैसे मेरे पास पहला feature value था X1 and X2, उसकी value 0 0 थी. H1 H2 से oh sir that's 0 0. हम लोग data change नहीं कर रहे. P4 नाम के point के लिए मेरे पास input था 1 1. H1 H2 से oh that's 1 1. मतलब जब आप final neuron को वो data pass कर रहे हो, तो it's similar to the actual data set.
So as a 0 0, it's a 0 0. 1 1, it's a 1. But what about this 0 1? For this 0 1, h1 h2 से ऐसा 0 1. That's fine. मुझे उसमें भी कोई problem नहीं. What about this 1 0? 1 0, it's right now considered as 0 1. So guys, यहाँ आपका feature space change हो गया. Feature space मतलब जो भी आपका inputted data, वो value अब यहाँ final neuron को pass होने के लिए change हो गया. Okay, ये किसने किया? Our hidden layer just does this. Okay, for the like particular model, for actually मुझे एक efficient model develop करना था. Okay, उसके लिए हमारे hidden layer ने internally अपने data set को change किया. So that's actually transformation. So our hidden layer will transfer the feature space data. So now let me just do this task. हम लोग अब h1 h2 को plot करने वाले हैं. So this is my final output. Okay, this is my final output. Final output in the sense that is my final model, and that is actually this because of this third neuron, because of the actually third neuron. Okay, now let me pass our h1 and h2 data. So let me pass 0 0. So 0 0 is over here. Then 0 1 0 1 0 1 0 1 actually is over here. 0 in this an x coordinate 0, y coordinate is 1. What about 2? Once again, this one is also 0 1. Actually हमारा data set क्या था p3 के लिए? It is 1 0. But hidden layer just transfer this 1 0 to 0 1. So that is also considered as 0 1, and 1 1 is something over here. Okay, so ये मेरा coordinate system है, and this y in the sense third neuron just predict. Okay, below this it is 0. In short, that is gray. Okay, binary classifier था, तो हम लोगों ने actually example लिया था, the blue and red points लिए थे, but here in this actually we have actually black and gray. Okay, both are the filled circles. So here we have just predict 1, in short black. So now let me just predict. So this third layer actually perfectly, otherwise third neuron actually accurately 100% with actually 100% accuracy, it will just predict the output. So that's that. So internally, हम लोगों ने सिर्फ hidden layer का concept समझा, how what the task of the hidden layer. So guys, hidden layer will transfer the actually data set. So जितने hidden layer ज़्यादा होंगे, actually जितना complicated data set है, you have to just introduce the hidden layers. So hidden layers ऐसे नहीं बोल सकते first hidden layer accurately सब कुछ transform कर देगा. So it depends, like what's the complex, whatever the data set you have and how much it is complex actually. So I hope that's clear. So what does the topic says? Topic want to just say layers are transformation into a new space. Layers are nothing but guys which actually transform your data set into the new space. That's that. We just learned that thing. So I hope that